हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एंड इसमें हम लोग हमारा केस देखेंगे दैट इज व्हेन आवर इनपुट वोल्टेज इज वेरिएबल एंड आवर लोड रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। सो हम लोग यहाँ पे सेम सर्किट यूज करेंगे विच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर द मिनिमम इनपुट वोल्टेज एंड द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। सो वी नो दैट when the Thevenin voltage is greater than equal to Vz, that means a Zener diode is on, and when the Thevenin voltage is less than Vz, that means a Zener diode is off. तो यहाँ पे हम लोग assume करेंगे हमारी condition which is Vth is equal to Vz. Now by applying Thevenin theorem in this particular circuit, we can get the value of Vth, that is Vi into RL by R plus RL, which is equal to Vz. अगर इससे हम लोग थोड़ा बहुत भी rephrase कर दें, we can get the value of Vi minimum which is equal to Vz times R plus RL by RL. अब बात करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन की that is the condition for maximum input voltage. So the maximum input voltage is limited by Iz maximum. अगर हम लोग इस particular circuit की बात करें and we apply Kirchhoff current law in this particular point, so we know that IR max is equal to Iz max plus IL, and यहाँ पे we know that IL is fixed. So we can get the value of IL as VL by RL, which can also be written as VZ by RL. अब हम लोग क्या कर सकते हैं that we can just apply KVL in this particular circuit. So we will have our expression as VI max minus VR max minus VZ, which is equal to 0. Now we can reframe this as VI max is equal to VR max plus VZ, and we can also write VR max as IR max times R plus VZ. So this is going to be the condition for our maximum input voltage. So that was all for this video, and I will see you in the next one.